हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक बहुत ही परफेक्ट बजट गेमिंग पीसी। तो दोस्तों मेरे एक कस्टमर ने उन्होंने अपने बेटे के लिए पीसी बिल्ड करवाया है। वो एक 16-17 साल का बच्चा है, उसको इस पीसी पे गेम खेलने हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए आपका बजट 35,000 35,000 रुपये है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एक परफेक्ट बजट गेमिंग पीसी रहेगा और आप आसानी से इसमें गेमिंग और वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स का इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनकी टेक्निकल डिटेल्स है, उनके फीचर्स क्या है, और साथ ही हम इस पीसी पे कुछ गेम प्ले करके भी देखेंगे, उनके बेंचमार्क भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है AMD राइजन की तरफ से आने वाला 3400G, जो कि एक 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। और जो उसकी बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो है 3.70 GHz, एंड जो अप टू फ्रिक्वेंसी है वो है 4.20 GHz। एंड जो इस पर ग्राफिक्स है वो वेगा ग्राफिक्स 11 है, यानी इसमें 11 कोर है ग्राफिक्स की। तो बहुत बढ़िया एक प्रोसेसर है। अगर आप अंडर बजट वाला कोई गेमिंग CPU बनाना चाहते हैं जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं इस्तेमाल करना है, तो आप ये वाला प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320MH, जो कि एक एंट्री लेवल का बेसिक मदरबोर्ड है। काफ़ी अच्छा रहेगा इस प्रोसेसर के लिए। तो दोस्तों अगर इस मदरबोर्ड के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। हमने इस मदरबोर्ड पर एक रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है जिसके की तरफ से आने वाली DDR4 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 8+8 16 GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगी। अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा इस मदरबोर्ड के साथ में और इस प्रोसेसर के साथ में। आसानी से आप इसमें गेमिंग कर लेंगे। तो जी स्किल की 8+8 16 GB 3000 मेगाहर्ट्ज़ की हमने रैम इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है एडेटा की 120 GB M2 वाली SSD हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस बिल्ड में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का एक हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है WD की तरफ से आने वाली 500 GB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है वो है एरोकूल की तरफ से आने वाली 450 वाट की हमने SMP इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि ये है। काफ़ी बढ़िया एक बजट ये गेमिंग वाली हमने इस बिल्ड में पावर सप्लाई इस्तेमाल किया है, एरोकूल का 450 वाट। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है सर्कल की तरफ से आने वाला एलिमेंटर X1 रेड LED। तो दोस्तों ये जो कैबिनेट है ये साइड से पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें 4 फैन रहते हैं, 3 फैन आगे रहते हैं, 1 फैन पीछे रहता है। इसमें जो LED रहती है वो पूरी रेड कलर की LED रहती है। तो ये वाला कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि सर्कल की तरफ से आने वाला एलिमेंटर X1 रेड LED। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से पार्ट्स का इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, हमने उनके टेक्निकल डिटेल्स को भी देख लिया है। तो दोस्तों हमने इस पीसी को असेंबल किया है। देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिखता है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। आइए दोस्तों देखते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव ये लग रहा है, क्योंकि हमने जो कैबिनेट इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो रेड एलईडी वाला इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बच्चे के लिए हमने एक पीसी बनाया था, तो बच्चे को ज़्यादा आरजीबी और लाइटिंग चाहिए था, तो हमने ये वाला कैबिनेट इस बिल्ड में इस्तेमाल कर दिया है। आप चाहे तो कोई सिंपल सा कैबिनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से पीसी चल रहा है, बहुत ही बढ़िया इस पर गेमिंग हो रही है और वीडियो एडिटिंग भी आसानी से इस पर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं कि हमने कौन कौन से गेम इस पे प्ले करके देखे हैं और उनकी बेंचमार्क को चेक करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। Mozambique, shotgun ammo here. New kill leader appointed. New kill leader. Attention. Watch for them. The champion has The champion has fallen. 30 seconds until minions spawn. Every step I forge my own fate. To love is to be bound. Betrayal. The shadows. Okay, eyes up. We're heading downtown. Expect trouble. Hey, we've got company on the right. Coming up on the back. Let's see what they got. Shit, I think I know this cop. Aw, cute. I'm serious. He's bad news. We scored big on this one. There's some prime hunting here. He's not quitting, Anna. Neither are we. Yeah? Speak for yourself. I'm out. What the hell? Richie! Richie! Did he seriously just...
This nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Come to daddy. Which one you want, nigga? Like that? Bobby Big. Sorry, fool. Let's move. All units, attack the way in Piccadilly Circus. This is Saber 2, bookshop secure. All units, civilians are exiting the bus by the fountain. We need to provide support. They're in the buildings. We need to clear them. You have civilians! No ETA at this time. Let's move. Secondary detonation, Kevin! तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि हमने इस पीसी पे गेम भी खेल के देख लिए। गेम काफ़ी बढ़िया इस पे चल रहे हैं। कौन कौन से गेम जो हमने खेले हैं वो आप इसकी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉस्ट की, जो हमने पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों जो प्रोसेसर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 12,500 रुपये, 12,500 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है। जो हमने मदरबोर्ड इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,800 रुपये, 3,800 में आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा। और जो हमने रैम इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 3,800 रुपीज़, 3,800 में आपको रैम मिल जाएगी सिंगल स्टिक। और जो हमने SSD इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 2,100 रुपये, 2,100 रुपीज़ में आपको SSD मिल जाएगी। और जो हमने इस बिल्ड में हार्ड डिस्क इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट है 1,650 रुपये, 1,650 रुपये में आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी। और जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 4,600 रुपये, 4,600 में आपको ये कैबिनेट मिल जाएगा। और जो हमने ACMPS बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 2,400, 2,400 रुपये में आपको ये ACMPS मिल जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो CPU की कॉस्ट आती है वो है 35,000, 35,000 रुपये में पूरा CPU बन के कम्प्लीट हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है इस बजट के अंदर। और इसमें जो गेमिंग है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है और वीडियो एडिटिंग भी आप काफ़ी आसानी से इसमें कर लेंगे।
तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई पीसी कंपोनेंट खरीदना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर आप खरीदना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।